Hello, and today's chapter is the Paper Menagerie ISC new syllabus from the book Prison. And this particular story is written by Ken Liu. This is a very emotional kind of story, very emotional kind of story, okay, and very fascinating also. But the thing is that I am not going to make a lengthy video of whole chapter in a single video, okay. It would be very lengthy. So what I will do part ओके ताकि आप लोगों को भी देखने में सुविधा हो, आप लोगों को भी समझने में सुविधा हो. So without wasting any more time, let's get into the chapter. Please take the book and take a highlighter so that you can mark down all the important keywords, because you need to add all those keywords or key phrases in your answer script to make it more gorgeous or more attractive. Okay. So चलो अब शुरू करते हैं. One of my earliest memories starts with me sobbing. I refused to be soothed no matter what mom or dad tried. So the story starts with sobbing, and I believe this is not a good indication कि मैं जब छोटा था तो सबसे पहले मेरा जो मेमोरी है वो है कि मैं sobbing कर रहा था, और कुछ भी हो जाए, मम्मी कुछ भी कह ले या फिर पापा कुछ भी कह ले, मैं calm down नहीं होता था. Dad gave up and left the bedroom. So this is parenting technique. Okay, dad gave up and left the bedroom, but mom took me into the kitchen and sat me down at the breakfast table. So it shows that the narrator had a good relation with his mother. Okay. बोल रहा है कि पापा जो है, मैं जब काम डाउन नहीं होता था, पापा गुस्सा होके घर से निकल जाते थे, बेडरूम से निकल जाते, लेकिन मम्मी ऐसा नहीं करती थी. मम्मी मुझे किचन में लेके जाती थी, मम्मी मुझे वहां पे बिठाती थी अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे. कान it means look, she said as she pulled a sheet of wrapping paper from the top of the fridge. For years, mom carefully sliced open the wrappings around Christmas gifts and saved them on top of the fridge in a thick stack. Okay, so मम्मी क्या करती थी, मम्मी उसे वहां पे बिठा के एक पेपर लेती थी मम्मी, और बोलती देखो यहाँ पे देखो, इधर देखो. और वो जो पेपर्स है, जो गिफ्ट रैपर्स है, वो मम्मी बहुत दिन से फ्रिज के ऊपर जमा करती रहती थी. She set the paper down, plain side facing up, and began to fold it. I stopped crying and watched her curious. So यहाँ पे ऑथर जो है उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है. ओके, वो क्या बोल रहा है कि मम्मी वो पेपर लेके मम्मी फोल्ड करती रहती थी, और प्लेन साइड देखना, जो रैपिंग पेपर है उसका एक साइड प्लेन रहता है और ऑपोजिट साइड डिजाइन किया हुआ रहता है. सो द प्लेन साइड जो है वो ऊपर, वो प्लेन साइड जो है वो ऊपर रहता था, ठीक है, और वो देखते हुए मेरा रोना बंद हो जाता था. She turned the paper over and folded it again. She plaited, packed, tucked, rolled and twisted until the paper disappeared between her cupped hands. So she used to plait the paper, she used to pack, tuck, roll and twisted the paper until the paper becomes very small and comes in her cupped hand. मतलब हाथ ऐसा करोगे तो इसे cupped hand कहते हैं, इसके अंदर पेपर जब तक ना आ जाए. Then she lifted the folded paper packet to her mouth and blew into it like a balloon. फिर वो हाथ को ऐसा करके अपने मुंह के सामने लाके यहाँ पे क्या करती थी, यहाँ पे ब्लो करती थी. कान, she said, Lahu, look, a tiger. She put her hands down on the table, let go. मम्मी हाथ में फूक मार के बोलती देखो टाइगर है. फिर वो मम्मी क्या करती, टेबल के ऊपर अपना हाथ खोल देती थी और वहां से एक पेपर टाइगर निकल के आ जाता था. A little paper tiger stood on the table, the size of 2 fists. यानी कि हाथ इतना करोगे तो ये जो 2 fist है, इस 2 fist का एक पेपर टाइगर का साइज था, placed together. The skin of the tiger was the pattern of the wrapping paper, white background with red candy canes and green Christmas tree. Why? Because the tiger is made up of wrapping paper. So it is obvious that the skin of the tiger would be the design of the wrapping paper.
I reached out to mom's creation. Mom's creation, very important phrase है. Mom's creation, somehow the mom's creation was the only source through which the narrator or the author got consoled. Okay, I reached out to mom's creation. Its tail twitched and it pounced playfully at my finger. Rosa, it growled, the sound somewhere between a cat and a rustling newspaper. So after getting Lahu is the name of the tiger. After getting the tiger, the narrator got satisfied, the narrator got consoled, and he started playing with the पेपर टाइगर. ओके, वो जो पेपर टाइगर था, पेपर टाइगर का आवाज कैसा था? somehow between a cat and rustling paper. I laughed, startled, and stroked its back with my index finger. The paper tiger vibrated under my finger, purring. Zeziao, Zezi, mom said, this is called origami. So this is ये जो दिस इज कॉल्ड ओरिगमी, ये किसने कहा? मॉम ने कहा कि देखो देखो ये इसे क्या कहते हैं? इसे ओरिगमी कहा जाता है. ओरिगमी क्या है ये आप लोगों को भी पता है. I did not know this at the time, but mom's breath was special. So the narrator is telling that I did not know what the magic basically my mom used to put over there, but definitely her breath was special. Why? Because after blowing into the paper tiger came alive. She breathed into her paper animals so that they shared her breath and thus moved with her life. This was her magic. ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मार्क करके रखो. लास्ट में इसके साथ हम लोग इस लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मम्मी का जो ब्रीथ था वो बहुत स्पेशल ब्रीथ था. क्यों? मम्मी वो जो पेपर टाइगर या फिर कोई भी पेपर ओरिगमी पेपर एनिमल जो भी मम्मी बनाती थी, मम्मी अपना जो सांस है वो सांस उस पेपर ओरिगमी में शेयर करती थी ताकि उन लोगों को भी जीवन मिले, उन लोगों को भी सांस मिले. डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग. तो वो जो पहला जो मतलब फर्स्ट जो पेज नंबर 24 में एकदम पहला जो पैराग्राफ है वहां तक वो खत्म. ठीक है, दिस वाज हर मैजिक. अब नेक्स्ट कंटेक्स्ट आ रहा है कि हाउ द नैरेटर्स फादर एंड मदर मेट विथ ईच अदर. ओके, डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ अ कैटलॉग. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि पापा ने मम्मी को एक कैटलॉग से उठाया था. इसका मतलब क्या है? कैटलॉग से उठाया था मतलब one time when I was in high school, I asked dad about the details. He was trying to get me to speak to mom again. So somehow it indicates that कुछ भी हो जाए, यानी कि उस नैरेटर के साथ शायद उसके मम्मी का कोई झगड़ा चल रहा था या फिर कुछ मतलब रिलेशन उस टाइम ठीक नहीं था. इसीलिए when the narrator asked his father about the details how he had got his mother, narrator's father told narrator to go, you please go to your mummy and ask her. Why? Because his father wanted him to speak to his mom. He had signed up for the introduction service back in the spring 1973. Flipping through the pages steadily, he had spent no more than a few seconds on each page until he saw the picture of mom. So one day, his father, the narrator's father, was sitting over there and he was फ्लिपिंग द पेजेस ऑफ द मैगजीन. यानी कि देखने मैट्रिमोनियल साइट में जैसा होता है. ठीक है, एक एल्बम दिया गया, उसमें सब लड़कियों का जो है वो तस्वीर है. ही केप्ट फ्लिपिंग द एल्बम until and unless he came to the photo of his wife. वही एक फोटो था जिसके मतलब जिसमें नैरेटर का पिताजी जो है वो स्टीयर करता रहा, यानी कि उनको पसंद आ गया. I have never seen this picture. Dad described it. Mom was sitting in a chair, her side to the camera, wearing a tight green silk cheongsam. Her head was turned to the camera so that her long black hair was draped artfully over her chest and shoulder. She looked out at him with the eyes of a calm child. So नैटी यहाँ पे बता रहा है कि मैंने मम्मी का वो फोटो कभी भी नहीं देखा था, लेकिन मेरे पापा वो डिस्क्राइब किया था. वो कैसा था वो फोटो? मम्मी एक चेयर में बैठी हुई थी, हर साइड टू द कैमरा. ठीक है, कैमरा के तरफ उनका साइड था और वो टाइट ग्रीन सिल्क चॉन्साम पहना था. ये चाइनीज एक मतलब जो अटायर है. हर हेड वाज टर्न टू द कैमरा. लेकिन मतलब मान लो कि अगर इस साइड कैमरा है तो ऐसे करके वो बैठी थी, लेकिन उनका हेड जो था वो कहां था? वो कैमरा के तरफ था.
और उनके जो लंबे बाल थे वो ऊपर चेस्ट के ऊपर एकदम आर्टफुली रखा हुआ था. एंड हर आईज वेर लाइक काम आईज. That was the last page of the catalog I saw, he said. So, नेटर का मम्मी का जो फोटो था वो कैटलॉग में लास्ट ही फोटो था. ठीक है. The catalog said she was 18, loved to dance and spoke good English because she was from Hong Kong. None of these facts turned out to be true. So ये बहुत एक पैथेटिक पॉइंट है. So उस मैगजीन में the magazine had the description of each and every girl whose photo were there. So but and in case of the narrator's mother there was description that she was 18 at that time. She was 18 years old. She loved to dance and she spoke good English. Why? Because she belonged to Hong Kong. But not a single information was true. एक भी information वहां पे सही नहीं दिया हुआ था. He wrote to her. He मतलब narrator का पापा. He wrote to her and the company passed their messages back and forth. Finally, he flew to Hong Kong to meet her. So after seeing the picture, he started liking her. Contact details also was also given over there. So he wrote to the lady. That means narrator's father wrote to narrator's mother. Okay. And somehow the company, in the middle there was the company through which they were communicating, and the company was passing the message to each and everyone, I mean to both of them. And finally narrator's father flew to Hong Kong. The people at the company had been writing her responses. She did not know any English other than hello and goodbye. So लास्ट टेंस में ये कहा गया कि वहां पे डिस्क्रिप्शन में जो जो दिया था उसमें उस डिस्क्रिप्शन में से एक भी इंफॉर्मेशन सही नहीं था. दैट मीन्स द नैरेटर्स मदर डिड नॉट नो इंग्लिश. शी न्यू ओनली टू वर्ड्स, हेलो एंड गुड बाय. सो नाउ द क्वेश्चन इज देन हाउ बोथ ऑफ देम कम्युनिकेटेड with each other. Actually, when narrator's father sent the message, he was getting the reply, and actually the company was replying him, and he thought that he is getting the reply directly from that lady, but actually it was not. Okay, you got the point. What kind of woman puts herself into a catalog so that she can be bought? The high school me thought I knew so much about everything. Contempt felt good like wine. Okay. Instead of storming into the office to demand his money back, he paid a waitress at the hotel restaurant to translate for them. So it shows that narrator's father was very decent. He was a gentleman. He was a well-behaved person. See, first of all, when he came to know that not a single information about the lady was true, he could easily go to the company and he could create a fuss, he could create a mess. Okay, he could create some trouble, but he did not do so. He did not do so. Instead, what did he do? He hired a waitress. He paid to the waitress so that the waitress could translate her Chinese language to English to the narrator's father. So the waitress became the translator. Okay. She would look at me, her eyes halfway between scared and hopeful. अब चाइनीज लोगों का जो है, हाँ देखने उन लोगों का आँख छोटा छोटा होता है. Well, I spoke. So when the narrator's father was speaking, somehow narrator's mother was scaring. Okay, he was frightened, and or no, वो half मतलब जो थोड़ा सा आँख खोल के वो देख रही थी. And when the girl began translating what I said, she would start to स्माइल स्लोली. बट जब वो जो वेट्रेस जिनको पैसा दिया गया था वो जब ट्रांसलेट करने लगी नैटर का फादर क्या बोल रहा है, तब जाके शी नैटर्स मदर स्टार्टेड स्माइलिंग. He flew back to Connecticut and began to apply for the papers for her to come to him. I was born a year later in the year of the tiger. Year of the tiger ये चाइनीज कैलेंडर के अनुसार एक ईयर है. अब देखो वहां से क्या किया, नैटर का जो पिताजी है, फादर है, वो कनेक्टिकट में रिटर्न आ गया. रिटर्न आके ऐसा नहीं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नो आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस गर्ल बिकॉज शी डज नॉट नो इंग्लिश. हाउ वुड आई कम्युनिकेट विथ हर. इंस्टेड ही अप्लाइड फॉर द पेपर्स फॉर ब्रिंगिंग हर टू
कनेक्टिकट, ठीक है, पेपर्स वगैरह लेगा, वीजा वगैरह लेगा, सो वो सब वो करने लगा। और नैरेटर जो है वो ईयर ऑफ द टाइगर में उनका जन्म हुआ। यहां से एमसीक्यू आ सकता है, कब नैरेटर का, कौन से ईयर में नैरेटर का जन्म हुआ। अब देखो, at my request, mom also made a goat, a deer, and a water buffalo out of wrapping paper. So the narrator really liked the origami, the art, the skill of his mother. He also requested her to make goat, deer, and buffalo out of paper, and his mother did so. They would run around the living room while Lahu chased after them, growling. When he caught them, he would press down until the air went out of them and they became just flat, folded up pieces of paper. I would then have to blow into them to re-inflate them so they could run around some more. So क्या हुआ, अब नैटर का जो मादर है वो गोट, डियर, वाटर बुफालो ये सब भी बनाता था, और लाहू क्या करता था, उन सब जानवर को चेस करता रहता था, ठीक है। और जब लाहू उनको पकड़ लेता था, अब देखो कुछ भी पेपर मतलब ऑरिगामी है वो ठीक है, लेकिन फिर भी शेर शेर होता है कि नहीं। तो अब लाहू जब उन लोगों के ऊपर पाउन से पाउन हो जाता था, तब उन लोगों का जो उसके अंदर ब्लो किया रहता हुआ था ना, तो मतलब हवा दिया हुआ रहता था, तो वो हवा सब निकल जाता था। फिर नैटर को क्या करना पड़ता था, नैटर वो सब पेपर को लेता था, फिर से ब्लो करके उसमें जान देता था। Sometimes the animals got into trouble. Once the water buffalo jumped into a dish of soy sauce on the table at dinner. He wanted to wallow like a real water buffalo. I picked him out quickly, but the capillary action had already pulled the dark liquid high up into his leg. So one day what happened, the water buffalo jumped into the plate of a soy sauce. Why? Because he wanted to wallow over there, but it was made of paper, so definitely it would be wasted over there. So the narrator quickly picked up the buffalo. लेकिन तब तक बुफालो का जो पैर है उसमें पूरा एकदम सोय सॉस लगा हुआ था। The sauce softened legs would not hold him up and he collapsed into the table. I dragged him out into the sun, but his legs became crooked after that and he ran around with a limp. So narrator ने क्या किया, उसे उस वाटर बुफेलो को वहां से उठाया, उसे सुखाया, लेकिन फिर भी पेपर जो है वो तो ऑलरेडी गीला हो चुका था ना। So after that the water buffalo could not walk properly. Mom eventually wrapped his legs in saran wrap so that he could wallow in the heart's content, just not in soy sauce. फिर मम्मी ने फिर रैप कर दिया उसके पैर को ताकि वो वैलो कर सके, लेकिन एटलीस्ट सोया सॉस बने, क्योंकि सोया सॉस तो भारी भी होता है ना, तो वो पेपर में लग गया तो वो ऑलरेडी वो पेपर जो है वो वेस्टेड हो गया। Also, Lahu liked to trouble sparrows when he and I played in the backyard. So this is the characteristics of Lahu also. Lahu wanted to play, Lahu wanted to make trouble for the sparrows also. But one time a cornered bird hit back in desperation. He whimpered and winced as I led him. He avoided birds after that. लेकिन क्या हुआ, एक बार एक बर्ड ने क्या किया था, लाहू को आउट ऑफ डेस्परेशन हिट बैक किया था। तब से जो है लाहू बर्ड्स को पसंद नहीं करता है और उसके लिए कुछ भी ट्रबल्स वगैरह क्रिएट नहीं करता है। एंड देन वन डे आई सॉ a TV documentary about sharks and asked mom for one of my own. So one day the narrator was watching a documentary on the TV and he saw a shark over there and he requested his mother to make a shark for him. She made the shark but he flapped about on the table unhappily. अब shark जो है वो पानी में रहेगा, so it was flapping on the table. I filled the sink with water and put him in. And see, this is the innocence of the narrator. The narrator could not understand that if he would put the shark into the water, it would be wasted once again because it is made up of paper. But he saw that the shark was flipping on the table. So what he did, he filled the sink with water and put the shark into the water. He swam around and around happily. However, after a while, he became soggy and translucent. Soggy हो गया, भीग गया, translucent हो गया, and slowly sank to the bottom and folds coming undone. और वो जब भीग गया वो भारी हो गया और वो एकदम सिंक के नीचे चला गया और वो जो पेपर जो है वो ऑलरेडी खुलने लगा।
I reached in to rescue him, and all I ended up with was a wet paper of peace. So somehow I rescued the shark, but it was already wasted. Okay. Mom made a new shark for me, this time out of tin foil. Next time मम्मी ने shark फिर से बना दिया, लेकिन tin foil से. यहाँ से भी MCQ आ सकता है. The shark lived happily in a large goldfish bowl. Lahu and I like to sit next to the bowl to watch the tin foil shark chasing the goldfish. Lahu sticking his face up against the bowl on the other side so that I saw his eyes, magnified to the size of coffee cups, staring at me from across the bowl. तो यहाँ पे क्या देखना कि अब नेट यहाँ पे बता बोल रहा है कि मैं और लाहू एक साथ उस शार्क को मैं देखता था. मम्मी ने शार्क को बना दिया था टीन फॉयल से, अब वो सॉगी हो जाने का कोई डर नहीं था. तो एक गोल्डफिश बोल में मैंने उसे रखा था. और मान लो कि ये गोल्डफिश बोल है, ठीक है. यहाँ पे इसका अंदर वो जो टीन फॉयल का शार्क है वो है, इधर से नेटर देख रहा है, इधर से लाहू देख रहा है, और लाहू अपना नाक जो है एकदम प्रेस करके रखा है कहाँ पे, उस बोल में. तो इस साइड से जब नेटर जब देख रहा है तो डेफिनेटली उनका लाहू का आंख, नाक, मुंह सब बड़ा बड़ा दिख रहा है. When I was 10, we moved to a new house across town. Two of the women neighbors came by to welcome us. Dad served them drinks and then apologized for having to run off to the utility company to straighten out the prior owner's bill. Make yourselves at home. My wife does not speak much English, so don't think she is being rude for not talking to you. So next, when the natter was 10 years old, they shifted to a new place. Okay, after they got shifted over there, two neighboring women came over there to greet them. And see, the natter's father already knew that his wife could not speak much English, so he could understand that if she would not talk to them, they might feel bad, that they might feel insulted. This is the reason the natter's father greeted them, welcomed them, and told them very clearly, see, I have some work, I am going out, you please make yourselves comfortable here, and don't think that my wife is not talking to you. Why? Because she does not know much English. Okay, so actually she is not rude, she is unable to communicate with you, so please don't feel bad. While I read in the dining room, Mom unpacked in the kitchen. She was doing something in the kitchen. The neighbors conversed in the living room, not trying to be particularly quiet. The neighbors were like what to say, and they were conversing. They were talking to each other, and they were not hiding. They wanted the narrator to listen what they were telling. वो लोग चाहता था कि सुने. He seems like a normal enough man. Why did he do that? यानी कि अब नेटर के पिताजी को देखो, हाँ वो तो नॉर्मल एक इंसान है, उन्होंने ऐसे क्या किया, क्यों किया? उन्होंने एक चाइनीज औरत को शादी करके क्यों लाया यहाँ पे? Something about the mixing never seems right. The child looks unfinished, slanty eyes, white face, a little monster. And see the child, how he is looking like a monster. He is having slanty eyes. Slanting eyes होता है चाइनीज का, and white face अमेरिकन का यानी कि फॉरेनर जो होता है उन लोगों का फेस जो है व्हाइट होता है. डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश? अब देखो ही यहाँ पे इटैलिक करके दिया हुआ है. डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश? दैट मीन्स वी कम टू नो दैट हिज मदर कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, बट डू यू थिंक ही कैन स्पीक इंग्लिश? द वुमन हास्ट आफ्टर अ व्हाइल दे केम इनटू द डाइनिंग रूम. हेलो डियर, व्हाट्स योर नेम? अब देखो जानबूझ के नेबर ऐसा कर रही है. अब वो किसके पास आया? नेटर के पास आया और पूछ रहा है, हेलो डियर, व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है? जैक. आई सेड माय नेम इज जैक. दैट डज नॉट साउंड वेरी चाइनीजी. अब वो नेबर एक दूसरे के साथ कन्वर्स करिए. नहीं, ये तो देखो, ये सुनने में तो चाइनीजी नहीं लगा. मॉम केम इनटू द डाइनिंग रूम. देन शी स्माइल्ड एट द वुमेन. The three of them stood in a triangle around me, smiling and nodding at each other with nothing to say until dad came back. फिर उस टाइम मम्मी आ गई और वो तीनों ट्रायंगल में खड़ी थी, बीच में मैं था. यानी कि यहाँ पे नेटर था, यहाँ पे एक वुमेन, फर्स्ट वुमेन, सेकेंड वुमेन, वहाँ पे नेटर के मम्मी. तो वो तीनों एक दूसरे की तरफ देख रही थी और स्माइल कर रही थी. एंड दे कुड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड until the narrator's dad
केम बैक। तो आज की वीडियो में बस इतना तक ही करूंगा, 25 मिनट 26 मिनट हो गया, ठीक है, बहुत ही बड़ा स्टोरी है, नथिंग टू डू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेज नंबर 26 के एकदम लास्ट पैराग्राफ से शुरू करेंगे। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ सिंगल अपडेट एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।